Good afternoon, everyone. Myself, C. Pathshala, Vice Chairman, MSME in the Startup Committee of ICI. Welcome you all in this today webinar on IPO fundraising. And we have very young and dynamic speaker today, CA Nishal Mittalji. So we will discuss how we can raise the fund, because in this time, fundraising is very important for any business. And through IPO, as we are seeing every day, marketing touching new heights. So that is the best way out to get the fund, because through IPO, if we are getting the fund, we need not to pay interest. Although MSME ministry has given this opportunity to MSMEs to raise the fund through banks also without collateral security up to 5 crore, but there we have to pay the interest. But if we raise the fund through IPO, then technically this is a capital of the company. So through this, we can grow more because we are not responsible to pay interest. And our SME stock exchange are playing a very vital role for arranging this capital for the MSME. So today we will learn how to raise fund. So I welcome once again CA Nishal Mittalji to discuss this with all our members. So over to Divang, our coordinator for today's webinar. Divang. Thank you, sir. I'm very warm welcome to our Vice Chairman, sir, CA Dr. Raj Chawla ji and CA Nishal Mittal ji. First of all, I introduce our speaker, CA Nishal Mittal ji. Nishal Mittal ji is a chartered accountant with having 10 years experience, and he had many startups in fundraising, and now he focusing on the booming SME IPO space. He helps SMEs and our startups with everything from raising funds to filling important documents like the draft red herring prospects. He also works closely with bankers, consultants, and investors to make sure everything goes smoothly. Nishal Mittalji is not just about numbers and paperwork. He also a big deal on Insta and YouTube. He shares helpful stuff and now has more than 5 lakh followers. His aim to teach and connect with people who want to learn about finance and starting their own business. Welcome, sir, and please give your useful and very beneficial webinar on this topic. Thank you. Thank you, Mittal ji. Thank you, Divang ji. Thanks for the introduction. And I would like to thank Committee of MSME, ICAI, Dheeraj Khandelwal ji, Chairman, Committee MSME, and Raj Chawla sir, Vice Chairman, Committee MSME of ICAI, for this opportunity on enlightening our fellow members on a booming field, that is SME IPO. Earlier, we knew opportunities that are traditional, like project financing and or the main board IPO. But now there is a new opportunity which has risen up, which is now known as MSME IPO. So primarily, it targets companies who are registered under Udyog Aadhaar. I'll just share my PPT as well. Just give me a minute. Devangji, is everything visible? The PPT? It's visible? Yes, sir, it's visible, sir. Okay. So we'll be discussing, and so there are fellow members as well. So we'll be discussing the opportunities as well, which are related to SME IPOs, which a CA can explore, and how they can route of fundraising through SME IPOs. We'll be starting with very basic to going to an advanced level to the procedure and the eligibility. First, we'll discuss what is SME as recognized by government. What is the need of an IPO? Why do you need to go for an IPO? Because
whenever we hear a word IPO ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज है. Like it's a thing which a big company can only get. But now this is just a myth. Even a small company having, say, a turnover of around 10 CR can get an IPO. Though the eligibility criteria of NSE and BSE is far lesser than this, which we'll be discussing in the subsequent slides. What is the eligibility criteria of NSE and BSE, and what is the optimum criteria you should meet according to my experience? What is the optimum eligibility that should be there for a company to get into NSE or BSE? Then we'll discuss what are the benefits with regard to getting an SME IPO as respect to getting a VC funding or raising debt, and the difference between SME IPO and the main board IPO. What are the different partners which are involved in this, the intermediaries? Having said that, merchant bankers, CA, and fundraising, that is by alternative investment fund. Then we'll be dividing it into two parts. One is the IPO, the eligibility of the companies, the procedure, the costing, where do we CA play a role in it, and what is the role of different intermediaries attached to it. Then there's a very interesting thing that is going on nowadays, that is pre-IPO, also known as dealing in unlisted shares. So we'll be discussing from both the point of view of as well as the investor and the company. Company can also do a pre-IPO. Unko kya fayda hai? What is the benefit to them if they're going for a pre-IPO? What is the benefit to the investor? We as an investor having invested in any of the unlisted shares or a pre-IPO share. Nowadays you must be seeing ki NSE ho gaya ya CSK hai. So there are many platforms that are offering pre-IPO shares for them. OYO also as an example. So before listing, these companies offer pre-IPO shares. What is the benefit of that? And do we as a company should go for a pre-IPO or not? Then if the time allows, we'll discuss certain case studies, live transactions on which we are working. And it will give you an overall walkthrough of how the procedure is done. So before starting, let us see why. Like, what is the euphoria all about? The stock market is certainly at all-time high, but what is the euphoria that is with respect to SME IPOs? I've taken some of the IPOs. These are the latest IPOs. These are 10 IPOs, and if you'll see the profit and loss, you will see majority of them as on date will be in the profitability of 50 to 100%. And at the same time, if you'll see the allotment, the number of applications that they have received, in some of the cases, it would be 100 times, and in some of the cases, it is 1,000 times. For example, if they have applied that we want a funding of 1 CR, they have received the interest from applicants of around 1,000 CR. This can be credited to both the market, as the market has been organized. The stock market has now been far more formalized and organized due to the participation of domestic investors. So recently I was studying that FIIs, the domestic investors, retail investors like us, have invested more than the FIIs. So या तो आप ये बोलिए कि market में liquidity ज़्यादा हो गई है, or the second thing can be because one of these SME companies will be the next multi-bagger. So before starting, let us understand some of the basic terms. Like, what is SME IPOs? What companies are eligible? Difference between debt and equity. Difference between main board and SME IPOs. VC funding versus SME IPOs. And offer for sale versus fresh issue. So by SME, you have heard about MSME, right? Micro, small and medium enterprises. Micro enterprises are the enterprises having turnover of up to 5 CR. Small enterprising having turnover of up to 50 CR, and medium enterprises having a turnover of around 250 CR. If we remove micro out of it,
Just remove M, then it will be SME, small and medium enterprises. So the company having a turnover up to 50 CR, note it is up to 50 CR. It can be 10 CR as well, 20, 30, 40. So up to 50 CR will be categorized as small, and above 50 to 250 will be categorized as medium. So these companies are eligible for getting listed. Then what is IPO? IPO in a simple term is diluting your equity while raising capital. So basically you are making your equity trade as a currency. Why is it said that it will become a tradable currency? And if you see the MSME segment in India, it is highly growing and booming. We concentrate on saying that startup funding and startup, but we don't understand the strength of MSME sectors in our country. 30% of the total GDP and 45% of the total exports are done by SMEs. And I'll explain you that startups are also SMEs. It is just a word that is used that these are startups or these are SMEs, but both a startup can also be classified as SME. Now we come to a very important part, that is debt versus equity. Usually SMEs companies go for project financing, and obviously government also have good schemes of MSME wherein collateral free loan is given up to 5 CR. But there are 3 parameters on which you need to distinguish between a debt and an equity. Number 1 is the cost of capital. In a debt, you will get a minimum cost of capital of around 9 to 12%. That is a recurring cost of capital and an annual cost of capital. Whether you are growing or not, आपको interest तो देना ही है. So that thing is with you on a recurring basis. The second is the principal amount. For example, you secured a funding of 5 CR. You need to pay back that funding even after the moratorium period for say 5 years or 10 years, depending upon the loan, whether it is CC or whether it is a capital market. Third is the security. You will ultimately need to give a personal guarantee or the security in case of debt. All these 3 parameters are not included when you are diluting your equity. There is no fixed commitment you need to give to the shareholders in the form of dividend or value growth. It is that if you are growing, your company is growing, your share price will automatically reflect it. Yes, Mr. Devan. मित्र सर, आप प्लीज स्क्रीन को थोड़ा साइड करेंगे, पीपीटी थोड़ी कट हो रही है. Is it okay now? मेरा तो हो साइड हो गया, आपका या नाउ इट्स ओके. Is okay now? Okay. Yeah. So we were saying that the equity में आपको you don't need to give a fixed commitment to any of the shareholders, whether in the form of dividend or in the form of repaying the principal amount. Now we come to third, security. There is no security or nothing that a promoter needs to give. The only thing is the dilution. The dilution is up to 25% of your shareholding. And now the people say that we'll lose the control. But remember, you have 75% of your shareholding. And the companies, if you see the startups and the companies which are getting IPO, especially the startups, if you see the Mama, Paytm, Zomato, any company you take, any startup you take, they barely have equity in double digits. And over here, you are still holding 75% of your equity. The third difference comes, what is the difference between an SME IPO and the main board IPO? See, with respect to trading, there is no difference. Like whatever I can trade on a platform, on a main board, for example, I want to purchase shares of Adani, the same way I can purchase any shares of SME IPO company. The only way comes in the minimum amount that needs to be invested. With respect to main board, you have a liquidity to trade in the per share. For example, Adani's price is 3,000. So you can trade, you can purchase or buy individual share of 3,000. But with respect to SME IPO, this is the only difference. You can note it down. This is the only difference. You need to trade in a lot.
and a lot is of around 1 lakh to 1.5 lakh. And how the lot is constituted? It is constituted, for example, you have 1500 shares and the price is 100 rupees per share. So the lot size will be 1.5 lakh rupees. So this is how a lot size is calculated. Then we come to the risk. People say that SME companies are small and thus they have a risk. But remember one thing, fundamentals will always be same, whether it is a small company or the large companies. And the potential to grow for a small company is far more as compared to any of the large companies. And there is not, this market has just been started. In 2012, it started. 2017 was a trending and the inclination line. And now it is speeding up. You can, with this, I'll give you a small data. So there are around 15,000 companies having a turnover of more than 250 crores. And out of that, 6,000 are listed in BSE or NSE. Roughly around 35 to 40% are listed. But SME companies having turnover of more than 10 CR to up to 250 CR, they are around 3.5 lakhs. And only 1,000 are listed. So not even 0.5% are listed. And I'll tell you the reason why they should be listed in the coming slide. What is the benefit of getting listed? And the myths attached to it. Earlier, it was only said that only large companies can go for SME IPOs. Only tech companies can go for SME IPOs. And it is too costly and time consuming. And it is ultimately giving you control of the company. I've discussed the controlling part. I'll come to the cost and the time consumed. Though certainly the time taken for getting a company ready for IPO will be longer. It will be around 3 to 6 months. I'll come to the timeline, each and every part of the procedure and the timeline. But if you want, you can roughly take it as 3 to 6 months, the time for getting it listed. Because the structure of the company might be proprietorship, partnership, or LLP. So there are different structures. It needs to be converted into public limited company. And different board committees need to be formed. So there are a bit of compliances. But yes, there are far less compliances as compared to a main board company. And I would say the compliances are too similar to what we have to do for project financing. Then come the cost. As I've discussed in project financing or into debt, you have a recurring cost of interest annually. But over here, there is no recurring cost. It is a one-time cost which needs to be paid for listing. And annual is a compliance cost, that is the government cost. That is the statutory cost that you need to pay. And that is also very nominal. Before going to the procedure, the eligibility and everything, let us also understand what is the difference between an SME and the startup. Many people say that we are startups, we are SMEs. Can a startup also get into IPO, SME IPO? So there are 3 parameters of differentiation. First is the turnover. Up to 250 crores, you are an SME company. And in a startup, up to 100 crores, you are recognized as a startup. Year of incorporation, up to 10 years, you are recognized as a startup. And there is no cap on the years of incorporation with respect to SME. Registration. This is a very thin line, registration. In SME, you need a Udyog Aadhaar, but in startup, you need a DPIT registration. So having said all these 3 points, for example, a company having a turnover of around 50 crores, having years of experience of 5 years, having Udyog Aadhaar registration and DPIT registration. So this can be classified both as a startup as well as SME. If you take it other way around as well, if you say that I have a startup and that can be classified as SME as well. So speaking that a startup can be listed on an SME IPO exchange. But हाँ, आपको बस ये देखना है कि आपके पास उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर SME. स्टार्टअप के लिए बस DPIT का रजिस्ट्रेशन है, and DPIT registration is primarily for getting tax exemption.
जो 10 years आउट ऑफ 3 years का टैक्स एग्जेम्पशन है उनके लिए बेनिफिट है वो. बट yes, a startup can also plan to get listed on an SME IPO. फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, कि हम लोग जो इशू ला रहे हैं वो फ्रेश इशू होएगा या ऑफर फॉर सेल होएगा. फ्रेश इशू हो गया कि जो फंड है दैट इज कमिंग इनटू द कंपनी, एंड ऑफर फॉर सेल हो गया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनको हम एग्जिट दे रहे हैं. अभी आज जैसे कि पेटीएम का था, अब एमके और फार्मास्यूटिकल्स का भी आईपीओ आ रहा है, तो आप ये जरूर देखिए कि ऑफर फॉर सेल कितना है और फ्रेश इशू कितना है. क्या पुराने प्रमोटर्स को एग्जिट मिल रही है या फिर कंपनी में पैसा आ रहा है? क्योंकि देखिए अगर कंपनी में पैसा आ रहा है दैट इज फॉर द ग्रोथ, और अगर पुराने प्रमोटर्स को एग्जिट मिल रही है तो जो उन्होंने वीसी फंडिंग के टाइम पे इन्वेस्ट किया था उनको एग्जिट मिल रही है. आप पेटीएम के केस में देखिए, पेटीएम वाज लिस्टेड एट 2150, बट उस टाइम का बहुत बड़ा आईपीओ था, बहुत हंगाम, बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुई और ये बोला गया था दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, और हम तो अंडर वैल्यू लेकर आ रहे हैं पेटीएम को. फिर गिरते 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 इशू जिस दिन ओपन हुआ उसी दिन 1900 पे ओपन हुआ, उसके बाद गिरते गिरते 800 900 पे गया, एंड फिर 300 400 500 पे रहा. बट मजे की बात यह है जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर थे उन्होंने एग्जिट कर लिया. तो सॉफ्ट बैंक था, उन्होंने एवरेज प्राइस जो था उनका फिर भी ज्यादा था जो उनका इन्वेस्टेड प्राइस था. तो आप ये देख लेना कि वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं या फ्रेश इशू है. फिर आता है कि हमें वीसी फंडिंग में जाना चाहिए या एसएमई आईपीओ में जाना चाहिए. देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है कि अगर आप वीसी फंडिंग में जाते हैं, वीसी फंडिंग हो गया, पीई हो गया या अल्ट्रा एचएनआईज हो गए, तो कोई भी आपकी कंपनी में फंड कर रहा है उसको एग्जिट चाहिए. और वो एग्जिट लेने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कल को बाय बैक करो शेयर, नहीं तो आप आईपीओ में लिस्ट करो. आईपीओ में या तो आप एसएमई आईपीओ में लिस्ट करोगे या मेन बोर्ड आईपीओ में लिस्ट करोगे. तो अगर कोई बड़ा वीसी फंड कर रहा है जैसे सिकोया कैपिटल हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया, तो भाई ऑब्वियसली एसएमई आईपीओ में टिकट साइज छोटा होता है, तो ये लोग मेन बोर्ड के थ्रू एग्जिट करेंगे. तो एग्जिट तो जरूरी है ही वीसी फंडिंग में. फिर वीसी फंडिंग में कहीं ना कहीं आपको बोर्ड की पोजीशन भी देनी पड़ेगी, सो दे हैव अ से इन योर कंपनी. यू डोंट हैव अ फ्रीडम कि आप कुछ भी डिसीजन ले लो, दे विल हैव अ से इन योर कंपनी. तो और एसएमई आईपीओ में आपको शेयर होल्डर्स हो, ऐसे कोई भी बोर्ड पोजीशन नहीं है, आपका खुद का बोर्ड कॉम्पोजिशन होता है. तो ये डिफरेंस है. दूसरा आप देखिए जो स्टार्टअप वर्ल्ड है, स्टार्टअप में अगर 1000 स्टार्टअप किसी को पिच करते हैं, किसी भी बड़े वीसी को पिच करते हैं 1000 स्टार्टअप, तो 100 स्टार्टअप्स को वो कंसिडर करते हैं, हाँ जी वी कैन गो अहेड विद देम. फिर उनका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फॉर्मेलिटीज एवरीथिंग लीगैलिटीज के बाद 10 स्टार्टअप्स ऐसी होती है जिसको वो अल्टीमेटली फंडिंग करते हैं. और 10 स्टार्टअप के बाद भी कुछ ही स्टार्टअप होते हैं जिसके अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी से निकल पाते हैं. तो आप वहां पे रेशियो देखिए, परसेंटेज देखिए कि कितनी स्टार्टअप फंडिंग के लिए जाते हैं और कितनों को फंडिंग मिलती है. एंड विद रिस्पेक्ट टू एसएमई आप ऑब्वियसली शॉर्ट शॉर्ट होती है, 100% अंडर राइटिंग होती है इसके अंदर, कि जैसे हम हो गए कोई फंड मैनेजर है या कोई मर्चेंट बैंकर है, तो इट्स 100% अंडर राइटिंग की अगर आपका इशू सब्सक्राइब नहीं होता, so it is the responsibility of the fund manager to get it subscribed. अब ये सब तो हमने समझ लिया कि एसएमई आईपीओ, वीसी और डेट इक्विटी में क्या डिफरेंस है, एसएमई आईपीओ क्या होता है. अब ये देखते हैं कि इनकी प्रॉब्लम, यूजुअली बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स क्या आती है जिसके वजह से वो ये सब सोचता है. सबसे पहले जैसे कि लिमिटेड ग्रोथ है, अगर फंड नहीं है, लिमिटेड फंड है, तो लिमिटेड ग्रोथ है. ब्रांड वैल्यू भी आपकी उतनी ही रहेगी जितना आपकी एक बनी हुई है मार्केट में. लाइक इफ यू वांट टू एक्सेलरेट तो आपको कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. फिर है आपका इंटरनल कंट्रोल्स. यूजुअली द लिस्टेड कंपनीज हैव अ फार बेटर गवर्नेंस देन एन अनलिस्टेड कंपनी, तो ट्रस्ट भी कम बनता है लोगों का. फिर डेट बर्डन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे ग्रो करो ना करो, जिस दिन आपने डेट लिया उस दिन तो आप लोग 30% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो कर रहे थे. बट यू नेवर नो बिजनेस का क्या है क्या नहीं. एक टाइम आया कि आप 5% सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हो, फिर आया 10%, पर आपको ब्याज तो 12% देना ही है, तो वो तो आपका अल्टीमेटली डेट बर्डन रहेगा ही रहेगा. फिर आता आईपीओ एज अ ड्रीम. पहले ही होता था बड़ी कंपनीज ही आईपीओ लाती है, छोटी कंपनीज की बस का नहीं, मतलब छोटी कंपनीज का ना कैपिटल होता है, ना कंप्लाइंसेस इतना कर सकते हैं, ना ऑर्गेनाइज होती है.
but you will be surprised companies having turnover of say 8 crores, 6 crores are getting IPO, though that is not recommendable from my side. I'll tell you the ideal turnover that should be there. But आप ये देखिए इतनी छोटी कंपनीज भी आईपीओ ला रही है, तो इसका स्कोप कितना होएगा। अब आते हैं हम बेनिफिट्स पे कि बेनिफिट्स क्या क्या है इसमें। सबसे पहला बेनिफिट है दैट योर इक्विटी बिकम्स योर करेंसी। देखिए दो ही करेंसी होती है, या तो जो ट्रेडेबल करेंसी हमारी है जो आरबीआई ने दी है 100, 200, 500 के करेंसी नोट्स, या आपकी इक्विटी जो सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। until and unless your equity, your company is listed, you cannot create wealth for yourself, neither for the shareholders. आप बोलो कि मेरी भाई नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है ऑन पेपर, उसका कोई फायदा नहीं ना until and unless आप उस 100 करोड़ को लिक्विडेट कर पाओ। तो इक्विटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आपको ये बेनिफिट देती है कि आप लिस्ट हो गए, उसके बाद आप मान के चलिए आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपीस है, आप लिस्ट हो गए, 2 साल बाद 3 साल बाद आपको लगा कि यार मेरे को ना दूसरी इंडस्ट्रीज में भी एक्सप्लोर करना है और फंडिंग चाहिए, तो कैसे करें। तो आप नेक्स्ट डे आप इक्विटी मार्केट में जाओ, 2-3% जो भी आपको लगता है आप अपने शेयर्स बेच सकते हो और आपको नेक्स्ट डे ही पैसा मिल जाएगा। सो योर इक्विटी इज नाउ इक्वलेंट टू द करेंसी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपको न्यूज कवरेज मिलती है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ऑर्गेनिकली सीएनबीसी, जी, ये सब बुलाते हैं ऑर्गेनिकली। दीज पीपल कॉल फॉर अ प्रमोटर्स कॉल, फॉर एन इन्वेस्टर्स कॉल, और इससे कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी बनती है, ब्रांडिंग बनती है, और कस्टमर्स और वेंडर्स के बीच में एक ट्रस्ट बिल होता है। फिर गवर्नेंस, कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी तो लोगों का ट्रस्ट इस पे इसलिए होता है क्योंकि इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, और बहुत केसेस में एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी अपॉइंट होते हैं। जैसे हमारा केस है, हम जो अभी आईपीओ ला रहे हैं उसमें हमने इंटेंशनली वी हैव मेड एन एक्स ब्यूरोक्रेट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज इससे क्रेडिबिलिटी होती है कि हाँ जी ही विल बी वेरी डिलीजेंट इन हिज ओपिनियन। देन इसॉप्स, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है एम्प्लॉय रिटेंशन की, चाहे फंड है, हम मर्चेंट बैंकर हो, सीए फर्म है, या इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन वांट्स टू रिटेन देयर टैलेंटेड एम्प्लॉयज। क्योंकि ये होता है कि 3-4 साल काम सीखे और फिर विद देम द वर्क ऑल्सो गोज। तो उसके लिए इसॉप्स, जितनी भी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द इसॉप मॉडल कि 5 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, एंड आप 0.25 या 0.5% डिपेंडिंग अपॉन द डेजिग्नेशन यू कैन एलोकेट योर इसॉप्स। एंड जो उसके बाद एक सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि 3 साल बाद आप लोग मेन बोर्ड में स्विच कर सकते हैं विद वेरी वेरी मिनिमम कंप्लाइंसेस। बस उसके अंदर पोस्ट इशू कैपिटल 25 करोड़ होनी चाहिए, एक फॉर्म सबमिट करना है, और आप मेन बोर्ड में स्विच हो जाएंगे। अब हमने बेनिफिट डिस्कस कर लिए, आईपीओ क्यों लाना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वीसी फंड के साथ क्या कंपैरिजन है, ये सब डिस्कस करने के बाद अगर वी आर ऑन बोर्ड कि हाँ जी चलिए, व्हाट इफ समवन इज कंसिडरिंग, किसी का क्लाइंट, सीएस क्लाइंट कंसिडर कर रहे हैं, या कोई कंसिडर कर रहा है आईपीओ लाने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोफेशनल फीस, क्या एलिजिबिलिटी है, व्हाट आर द टारगेट कंपनीज, आपकी एलिजिबिलिटी आइडियली क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द शेयर प्राइसिंग, और डिफरेंट पार्टनर्स जो इन्वॉल्व है, एंड एंड में विल डिस्कस अबाउट प्री आईपीओ एज वेल। Devang ji, before going forward, would you like to take any questions? There is some questions. Just give me a minute. I will ask you. The first question is, what is meant by SME exchange? So SME exchange is under NSE only. NSE में कहते हैं NSE emerge, and BSE में कहते हैं BSE SMA. इट इज ट्रेडिंग सेम एज एनएससी। जैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कंपनी को ट्रेड करते हैं, वैसे ही एनएससी में
NSE emerge और NSE BSE SME में आप trade कर सकते हैं. मतलब you will have no bifurcation in that sense. You will be said that you are listed on a stock exchange, and that is a part of NSE only. And so next question is, what is allocation matrix and how it's work? Okay, so that will come on the allocation. How much has to be allocated to HNIs, how much has to be allocated on anchor, and how much to be allocated on retail investors. That will discuss the percentage of it. And so next question is, what is the annual maintenance cost of on SME platform? So the statutory fees, if you're talking about on annual maintenance, that is depending upon how much the market cap is. But yes, it will be around 1 lakh only. Different parameters are there. For example, if you have a market cap of 50 CR to 100 CR, the fees is around 40 to 50,000. If you have around 100 to 250 CR, the fees is different. But that will be around 1 lakh only. That is not a significant fee on an annual basis of the exchange. Yeah. That's it, sir. Now, okay, I'll continue. So procedure, we can divide the procedure into three parts. Please hide, Yes, sir. hide the screen because PPT is Okay. not. Oh, 1 minute. Yes. Now it's perfect, sir. Okay. So we'll divide the procedure into three parts. First is the compliance, audit, and the due diligence that needs to be done. Second is the fundraising. Fundraising is the most important part because ultimately how we are sourcing the fund, that is far more important than the compliance or the DRHP. And the third is filing of DRHP with the exchange. So first, let us discuss what are the compliances that you need to do, that a company needs to do before getting into SME IPO, before getting listed. This should be at the back of your mind that these checklists, these 8 points, should be covered during the procedure. So the procedure which I told you that it takes around 3 to 6 months, this includes the compliance part as well. So I'm taking into account all these compliance steps, and these all are done parallelly. Number one is converting your proprietorship firm or private limited company into a public limited company. Second is setting up appropriate capital structure, the authorized share capital, the paid up share capital. That needs to be structured. Increase in authorized share capital as required on post-issue capital structure. Board approval and shareholders of the company. Appointment of independent board. So as I told you that you have to appoint an independent director. So these are some of the MCA requirement which you need to do before getting public. Now there should be one woman director, there should be one company secretary. Then the financial statements will be reinstated for the last 3 years as per the peer review auditor. So the auditor which you have right now, he may or may not be a peer review auditor. If he is a peer review auditor, then there is no compulsion of reinstating. But if it is not done by a peer review auditor, then you need to do it for the last 3 years. And then the final audit of the current financial year in which you are getting. One point you need to note is that it is not mandatory to get it at the end of the financial year. You can get the IPO on 6 monthly basis as well. For example, you can get it on the September numbers as well. You can get it on the December numbers as well. So there is no compulsion on getting it on the year end. You can get it on the 6 months or the 12 months, and that profit or that revenue will be annualized. Then is the due diligence. Due diligence are of 3 types: financial, legal, and tax due diligence. And this is primarily done by CAs and a lawyer. And the most important document is investor's pitch deck. This is the document through which you tell them what is the vision of the company, what the promoter aims to do, what is the profitability, what is the future projections of the company, and basis of that, the investor shows interest,
and the funding is done. So these are the 8 things. These are the 8 points which are pertaining to compliance. These are done on a parallel basis when we are preparing for DRHP and when we are preparing for investors funding. So as I discussed earlier, so there are 3 partners, 3 intermediaries that are involved. One is the CA, the other is a merchant banker, and the third is the fund, AIF. So this is a comparison on what a CA will do, because there are many fellow members who are attending this webinar. So for them, what all is their scope, what all they can cover, what a merchant banker covers, and then will come what an anchor allotment will cover, what an AIF will do. This is the allotment part, which one of the members asked. So a CA and merchant banker, CA can do primarily all of the things except DRHP. Because DRHP is a technical document that a merchant banker prepares that need to be filed with the SEBI, and it can only be done by a merchant banker. But if you come to due diligence, a CA can do it as well as a merchant banker. Compliances which were discussed in the earlier slide, it can be done by CA. Merchant banker usually don't do it. They usually outsource it to CS or CA. Reinstatement of financial statement, that has to be mandatory done by a CA. Merchant banker has no role in that. DRHP, that will be filed by a merchant banker. CA has no role in that. And fundraising. So fundraising is the most important and the interesting part. Fundraising usually is done by merchant bankers and AIF, alternative investment fund. So the merchant banker takes a guarantee, Hanji, I'll get the fund arranged, or you can directly approach an AIF for the fundraising purpose as well. और fundraising क्यों करनी है उस पे आते हैं पहले. Fundraising, how the fundraising process works, because this is one of the most important thing, fundraising, because compliance and DRHP part will be taken care, but ultimately you need to see who all investors are coming and are investors on board or not for the valuation which you are asking. So there are 2 types of allotment of fundraising. One is fixed price IPO. The other is the book building IPO. Fixed price IPO people generally don't get. I'll first explain what is it, and then I'll explain what people prefer, what SEBI prefers, and what investors prefer. Fixed price is कि भाई आपने डायरेक्टली आईपीओ लेकर आ गए, आपने कहा कि हम आईपीओ की वैल्यू, हम अपने शेयर की वैल्यूएशन लगा रहे 225, हम कोई रेंज नहीं है. आप यूजुअली देखेंगे रेंज में होता है आईपीओ, 200 to 250 की रेंज में, मतलब रेंज होती है व्हेनेवर एन आईपीओ कम्स. बट कुछ आईपीओ होते हैं जो फिक्स्ड पे होते हैं कि फिक्स प्राइस, भाई हम 225 पे लेकर आ रहे हैं और हम सबकी एंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द मार्केट. मतलब हम रिटेलर्स और एचएनआईज को दे रहे हैं. रिटेलर्स हो गए जो 2 लाख से कम लगा रहे हैं, एचएनआईज हो गए जो 2 लाख से ज्यादा लगा रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि हम सब कुछ ही मार्केट में दे रहे हैं, हम कुछ भी इंस्टीट्यूशन या एंकर अलॉट में नहीं कर रहे हैं. दूसरा आता है बुक बिल्डिंग. बुक बिल्डिंग के अंदर आपको मिनिमम 35% रिटेलर्स को देना है, 15% एचएनआईज को देना है, और बैलेंस मान लीजिए 49% या 50% आपको इंस्टीट्यूशंस को देना है. इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गए. अब बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि जो भी एआईएफ या इंस्टीट्यूशन फंड आया है वो सोच समझ के आया है, उसने पूरी ड्यू डिलिजेंस करी है. तो वो जी रिटेलर्स को ज्यादातर जीएमपी के बेसिस पे आज की डेट में अप्लाई करते हैं. फंडामेंटल्स बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो बहुत डिलीजेंटली और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं. बट अगर आप बुक बिल्डिंग में आए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग, तो दैट ब्रिंग्स अ ट्रस्ट एंड अ ब्रांड वैल्यू. यहाँ जो दिस पर्सन इज इन्वेस्टिंग, सो वी कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी एंड वी कैन स्टे इन्वेस्टेड. सो इन्वेस्टर्स का तो आपका, so it is very important to onboard an AIF or a QIB for your IPO. And SEBI also recommend कि go for book building IPO rather than fixed price IPO. And majorly आप देखेंगे जो performance driven company है, जो growth driven company है, they will be coming with book building IPOs only. तो
बुक बिल्डिंग आईपीओ जो हम लाते हैं उसके अंदर जैसे हमने डिस्कस करा कि मैक्सिमम एंकर अलॉटमेंट आपकी 50% रहेगी। एचएनआईज जो मिनिमम अलॉटमेंट है वो आपको 15% देने, 15% से आप ज्यादा भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं। रिटेलर्स को आपको मिनिमम 35 देंगे, आप 40 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो सीरियस इन्वेस्टर्स है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं। क्योंकि देखिए रिटेलर्स जो भी होते हैं, जिस दिन आप आईपीओ लाए, मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स आर ओनली फॉर द लिस्टिंग गेन। 50% पे आईपीओ खुला तो आप देख लेना 50% रिटेलर्स सेल करेंगे ही करेंगे डे वन पे, एंड उसके वजह से योर स्टॉक प्राइस विल डंप। तो जितना रिटेलर्स पार्टिसिपेशन कम होती है उससे ट्रस्ट भी बनता है, और जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स होते हैं उनको भी ये लगता है कि हाँ जी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। एनएससी और बीएससी की अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी तो बहुत नॉमिनल है, बहुत मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उसके हिसाब से तो एवरी सेकेंड कंपनी इज एलिजिबल। दो अभी सेबी ने थोड़ा टाइटन अप हुआ है, अभी हाल फिलहाल में सेबी ने एक रेगुलेशन कल परसों ही निकाली है कि जो आपका लिस्टिंग गेन होएगा वो 90% से ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनीज रहती है जिनका लिस्टिंग गेन 200% होता है, बट अभी सेबी ने कहा कि आप 90%, मतलब इतना यूफोरिया है इस चीज का, इतनी सारी चीजें हैं इसमें कि सेबी को एक कैप लगानी पड़ी कि भाई आप जो लिस्टिंग करोगे और 90% से ज्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते गेन पे, 90% का गेन नहीं दे सकते आप, उससे ज्यादा गेन नहीं दे सकते, उससे कम पे ही लिस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। मतलब एक कैप लगा दी गई है इस रीजन की वजह से। इसमें रेवेन्यू का कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर है नेटवर्थ का। आप एनएससी देखो बीएससी देखो, दोनों में नेटवर्थ का पैरामीटर है कि 1 CR तक का, या पिछले प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आपकी 1 CR की नेटवर्थ होनी चाहिए। एंड प्रॉफिटेबिलिटी है कि आउट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर यू शुड बी प्रॉफिटेबल, दैट्स इट। इसमें बस बोला प्रॉफिटेबिलिटी, देर इज नो मिनिमम पैट, देर इज नो मिनिमम रेवेन्यू दैट हैज बीन laid down. Yes, obviously the funding requirement should be working capital, investment, or fixed assets or expansion. General corporate purpose में you can only invest 10 to 15%. But you should have a प्रॉपर गाइडलाइन की आप फिक्स वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स एसेट्स में कितना करेंगे, अगर आप कोई एक्विजिशन कर रहे हैं वो कितनी होएगी, क्योंकि उसका एनुअल आपको एक सबमिशन करना होता है एनएससी में कि हाँ जी मैंने फंड यूटिलाइजेशन ऐसे ऐसे करा है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मिनिमम रेवेन्यू या पैट लें तो इसमें दो पार्ट आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका प्री रेवेन्यू, प्री आईपीओ, फिर आएगा एसएमई आईपीओ। अगर आपकी टर्नओवर 30 CR तक है, 30 CR अपवर्ड्स हैं, 30, 50, 100, 200, 250, देन यू कैन कंसिडर टू गेट लिस्टेड। बट अगर आपकी उससे कम है देन यू शुड कंसिडर टू गेट अ प्री आईपीओ डन। एंड जब आपकी उतनी हो जाए, व्हेन यू आर मैचिंग दैट एलिजिबिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हो जाए, बेटर हुए, देन यू कैन गो फॉर एन आईपीओ। क्योंकि एवरीथिंग इन दिस मार्केट वर्क्स ऑन द पीई रेशियो, कि आप प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी मान के चलिए आप 10% दिखा रहे हैं तो वो आपके रेवेन्यू से ड्राइव होगी। तो जितना आप रेवेन्यू आपका है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी, उतना पैट, एंड उतनी ही अच्छी आपको वैल्यूएशन मिलेगी। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 महीने या 3 से 6 महीने आज की डेट में लग रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो है कंप्लाइंसेस, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो अभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रही हैं, प्रोप्राइटर में काम कर रही हैं, उनको कन्वर्ट करना पब्लिक लिमिटेड में एक, उसमें टाइम लग जाता है, कम से कम 1 महीने का टाइम है। बोर्ड अप्रूवल्स, अलग अलग बोर्ड अप्रूवल्स है, अलग अलग एमसीए की ड्यू डिलीजेंस है, फिर जो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस होती है, टैक्स ड्यू डिलीजेंस होती है, या लीगल ड्यू डिलीजेंस होती है उसमें। एंड उसी के साथ साथ डीआरएचपी, डी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो प्रिपेयर करता है मर्चेंट बैंकर, इसी के पैरेलली वो प्रिपेयर करते हैं ये मर्चेंट बैंकर, इसके अंदर भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो ये सब अप्रूवल्स, कंप्लाइंसेस प्रिपेयर करना, इन सब में आप ये मान के चलिए आपको 2 से 3 महीने लग ही जाएंगे। फिर आता है कि एक बार आपने डीआरएचपी फाइल कर दिया, देखिए प्रोसेस क्या होता है, पहले आपने कंप्लाइंसेस करी, डीआरएचपी प्रिपेयर करा,
फिर आपने DRHP NSE को फाइल करना है, NSE या BSE जहां पर भी आपको लेकर आना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लाना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लाना है, वो आपकी वो है। दो यूजुअली पीपल प्रेफर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट या BSE के भी लोग लेकर आते हैं। तो एक बार ये आपने कर दिया, उसके बाद आपको सबमिट करना है NSE में या BSE में। दे विल एटलीस्ट टेक 1 month to 2 month, और आजकल तो खैर ज्यादा ले रहे हैं, 2 महीने तो आज की डेट में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दैट आर गेटिंग इनटू SME IPO। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए 2 महीने लग रहे हैं आज की डेट में। और इसी के साथ साथ हम लोग फंड रेजिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर देते हैं। हम अलग अलग रोड शोज करते हैं, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज में रोड शोज करते हैं फॉर फंड रेजिंग। जो आपको एंकर अलॉटमेंट कहा था मैंने 50%, उसके लिए फंड रेजिंग के लिए रोड शोज करने पड़ते हैं फॉर पिचिंग दैम। तो एक बारी फाइनल अप्रूवल आ गया सेबी से, सॉरी NSE से। NSE से फाइनल अप्रूवल आएगा, सेबी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेबी को बस हमने इंटीमेट करना है, वो इसमें अप्रूवल या कुछ नहीं करती। आप देखोगे मेन बोर्ड के केस में अल्टीमेटली सेबी के पास पावर है। सेबी गवर्नमेंट रेगुलेटरी है जिसके पास पावर है टू अप्रूव और नॉट। और आप देखोगे ओयो के केस में भी सेबी ने कहीं ना कहीं रेड फ्लैग उठाया था, मामा अर्थ के केस में भी उनको विड्रॉ करना पड़ गया। मामा अर्थ को भी ओयो ने 2 बार DRHP विड्रॉ करा है, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है। बट इस केस में सेबी अप्रूव नहीं करता। सेबी के पास आपको सबमिट करना, उनको अप्रूवल नहीं करना, अप्रूवल NSE को करना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही करेगा अप्रूवल। तो एक बारी आपका अप्रूवल आ गया, उसके बाद 10 से 15 दिन का ही पूरा मैटर है जब आपके अकाउंट में पैसा आएंगे। मान के चलिए 1 जुलाई को अप्रूवल आया, 3 जुलाई को आप एडवर्टाइजमेंट डालेंगे कि वी आर ओपनिंग आर इशू फ्रॉम 5th of July to 8th of July। एडवर्टीजमेंट हो गए, पीपल विल अप्लाई फ्रॉम 5th to 8th। 9th को आपके एक एस्क्रो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। 10th को जो अलॉटमेंट जिनको मिलती है, जिनको नहीं मिलते उनको आप रिफंड कर देते हैं। एंड 11th और 12th को द IPO गेट्स लाइव। So it's a 10 to 15 day process once an approval is received from NSE और BSE। उसके बाद अब ये आता है कि चलिए ये तो हमने कर लिया, इसके अंदर तो हमें फंड्स भी मिल रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द फीस जो होती है वो फंड्स के बाद ही जा रही होती है। जब फंड्स आ जाते हैं तो जो अंडर राइटिंग फीस होती है वो उसके बाद ही आप लोग देते हैं कंसल्टेंट को या फंड मैनेजर को या मर्चेंट बैंकर को। बट उसके बाद मेरे को क्या कंप्लाइंस है पता लगा, मैं लिस्ट हो गया और उसके बाद मेरे इतने सारे कंप्लाइंसेस है कि मैं उसी में उलझा हुआ हूँ। तो इसके अंदर देखिए मेजरली आपको 2 कंप्लाइंस है जो करना है। एक है कि आप जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं उसकी जगह आपको 6 months फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है, बट दैट इज अनऑडिटेड। आपको CA से साइन नहीं करवानी, आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस प्रिपेयर करनी है, वो CA से साइन नहीं होती है। एनुअल ऑडिट एनुअल ऑडिट साइन होता है, बट हाँ इसमें एक और आ गया कि 6 months आपको वो करनी है। दूसरा इसके अंदर ये आ जाता है कि आपको एनुअली बस NSE को ये इंटीमेट करना है, सेबी को, कि हाँ जी जो फंड मैंने लिए थे दैट हैज बीन यूटिलाइज एज पर द DRHP। वो आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी बैंक को देना ही होता है। बैंक को तो उल्टा क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं हम स्टॉक स्टेटमेंट और डेटा स्टेटमेंट, एंड ओवर हियर वी नीड टू गिव इट एनुअली। सो दिस इज द टाइमलाइन, एंड आफ्टर 3 years यू आर ऑटोमेटिकली माइग्रेटेड टू मेन बोर्ड। अब बहुत सारे लोग आते हैं जो ये पूछते हैं कि हम किस वैल्यूएशन पे लेकर आए। देयर वुड बी मेनी कंपनीज आल्सो हु वुड बी अटेंडिंग इट। जो ये होता है कि व्हाट वैल्यूएशन शुड वी गेट इट, बिकॉज अल्टीमेटली फंडिंग तो उस पे ही होती है। तो देखिए हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वैल्यूएशन के, यूजुअली PE रेशियो होता है, DCF मेथड। DCF मेथड यूज नहीं होता है इसमें। इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि आपके कितना पैट है, उसके कितने टाइम्स आप इशू लेकर आ रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और आपके क्या पीयर कंपैरिजन है। मैं आपको एक लाइव ट्रांजैक्शन बताता हूँ जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिनका IPO इज पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम NSE। वी हैव फाइल्ड फॉर DRHP। सो इन दैट केस दे आर इनटू साइबर सिक्योरिटीज एंड IT सर्विसेज, एंड उनका P इज अराउंड 17। अब बहुत लोग कहेंगे 17 इज ऑन अ लोअर नंबर, बट 17 भी हम until unless you have something for the investors, वो पहली बात इंटरेस्टेड नहीं होएगा। दूसरी चीज आपको पीयर्स को भी देखना है। आपको इन्फोसिस, विप्रो, HCL ये सब देखें, निफ्टी का क्या ट्रेड हो रहा है, PE सेक्टोरियल PE क्या है। तो अगर उनका PE 28, 29, 30 है
मैं उस पी पे नहीं ला सकता, आपको उस पे एक हैवी डिस्काउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर एट अ लेवल, वो एक लेवल पे जाके इतना पी है, एंड देयर ग्रोथ एंड एवरीथिंग हैज बीन टेस्टेड बाय द मार्केट। तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू लीव समथिंग फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। तो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव होता है उस केस में, बट यस इट इज ऑन द पी रेशियो ओनली, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही आप कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीयर कंपैरिजन। अब दूसरा सवाल ये आता है कि यार बहुत सारी कंपनीज है जो मैं अगर देखूं तो 22 की पी पे आ रहे हैं, 30 की पी पे आ रहे हैं, 35, और इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज है जिनकी 60 की पी भी है। अब देखिए वो ना, एक चीज होती है कि क्या मर्चेंट बैंकर के साथ क्या बात है उनकी, दूसरी है उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है कंपनी का। उसके लिए हम देखते हैं पीईजी रेशियो, कि मान के चलिए कि जो कंपनी 30 की पी पे आ रही है उसका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 100% है, तो वो ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रहा है कि जब मैं मार्च 25 के नंबर लाऊंगा, मार्च 25 के नंबर जब मैं पब्लिश करूंगा, तो दैट ही इज डिस्काउंटिंग राइट नाउ। सो ही इज सेइंग कि इफ आई एम गेटिंग ऑन अ पी ऑफ 30 बट माई मार्च 25 नंबर्स अगर मैं उस पर देखूं, देन माई पी इज लेस देन 15। सो ही इज समवेयर डिस्काउंटिंग दैट। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर ईयर टू ईयर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ क्या है। फिर आता है कि बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, उनका हम कैसे करते हैं। देखिए एसएमई आईपीओ में नहीं आती हैं और मेन बोर्ड में आती हैं, और वो भी आज की डेट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। स्टार्टिंग में ही आई थी जो आई थी, अब नहीं आ रही है। बट हाँ, अगर आप मेरे से कहें कि जैसे मान के चलिए अब हाल फिलहाल में जो मेरे को याद है स्विगी आ रही है, अब स्विगी के केस में यू कैन सी द पी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ है नहीं, तो पीपल सी प्राइस टू सेल्स रेशियो, कि कितनी मार्केट कैपिटल पे है और क्या सेल्स है, रेवेन्यू होगी ना, ऑब्वियसली रेवेन्यू होगी, तो रेवेन्यू दे कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ जोमेटो एंड स्विगी। तो ऐसे पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं फॉर अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप। बट एज सच लॉस मेकिंग स्टार्टअप एसएमई आईपीओ में नहीं आती, और मेन बोर्ड में भी अब बहुत कटेल हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है, बिकॉज उनको पता लगता है कि रिटेलर्स विल बाय आउट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। जो पहले जो आपने करा उसके वजह से रिटेलर आर नॉट इन्वेस्टेड इन द लॉस मेकिंग। और अभी मैंने जैसे आपको बताया फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग वाला, तो वैल्यूएशन में क्या होता है कि कोई 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 क्या, ज्यादातर 90% केसेस में होता है कि कंपनी कहती है कि हम फिक्स वैल्यूएशन अपनी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो हम एक रेंज में ला रहे हैं, मान लो 200 टू 250 की रेंज में ला रहे हैं, 20% का गैप होता है, एंड दे से दैट मार्केट विल डिटरमाइन ऑन इट ओन, कि आप बिड करिए, हम 200 टू 250 की रेंज में वी विल बी गेटिंग आवर आईपीओ। आपको कितनी, व्हाट इज द रेंज दैट यू नीड टू बाय द शेयर्स, यू जस्ट प्लेस अ बिड, एंड वट एवर whosoever will give a highest bid उसके हिसाब से we'll allot। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख शेयर्स फ्रेश इशू में आए, 10 लाख शेयर्स इशू मार्केट में फ्लोट कर रही है कोई कंपनी, अब उसकी जो एप्लीकेशन है वो आ गई 1 करोड़ की, लाइक 1 करोड़ एप्लीकेशन आ गए 10 लाख शेयर्स के अगेंस्ट, तो कंपनी अलॉट करेगी जिसने हाईएस्ट लगाई है। फॉर एग्जाम्पल 250 वाले ने 5 लाख, मतलब 250 की प्राइसिंग पे 5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, 245 पे 4 लाख लोगों ने लगाई, और 240 पे मान लीजिए 10 लाख लोगों ने लगाई, तो पहली प्रेफरेंस मिलेगी 250 वालों को, 5 लाख उनको अलॉट होंगे, फिर 245 वालों को, और फिर 240 वालों को ऑन अ प्रो डाटा बेसिस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बुक बिल्डिंग, एंड मेजरली एवरीथिंग गोज ऑन बुक बिल्डिंग ओनली। एंड फिक्स प्राइस एज आई डिस्कस, कंपनी बोलते हैं मैं 225 पे ही ला रही हूँ, अब 225 पे ही आपको बाय करना है या बाय नहीं करना, वो आपका डिसीजन है, एंड इसके अंदर एंकर एलोकेशन नहीं होता, दिस इज टू बी नोटेड। फिर आता है हमारा जो इसी के साथ आता है, लोग बोलते हैं यार ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका 50% चल रहा है, और ये स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना हाई चल रहा है। तो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम का समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि व्हाइट मार्केट होती है, व्हाइट मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज दैट इज हाईली रेगुलेटेड, it has all the legal frameworks in place, and you can purchase and shares in a legal and statutory manner. That is a white market. Black market is which is government have laid down rules that this is prohibited, this should not be there, and if this is there then these PNL actions will be taken. So this is a market which has been prohibited for the traders, black market.
इन दोनों के बीच बीच में आता है फाइन लाइन, दैट इज अ ग्रे मार्केट, wherein the SEBI has not laid down any rule. Primarily for the listing gains. It doesn't take fundamental into account as much as it takes sentiments. It is more of a sentiment driven market, and it is primarily showing the listing gains. The listing gains क्या आएंगे, and उसके बाद में it doesn't work. Devang ji, हाँ जी सर. so before we go to pre-IPO, so the last segment of pre-IPO is left. So we are done with the SME IPO segment. So if we have any questions or something, we can take it, and then we'll wrap it up with pre-IPO. Yeah. This means how to check the bidding details for SME IPOs. How to check the Bidding detail for SME IPOs. बिडिंग डिटेल? अगर आप लिस्टिंग वाली डे कह रहे हैं तो लिस्टिंग वाली डे आपको यू विल गेट इट ऑन द ऐप जो नॉर्मल होती है. 9:45 से स्टार्ट गेटिंग बिड, एंड जो सेलर्स एंड बायर्स का जो मीडियम रेट होता है उस पे गेट ओपन. The next question is whether last 3 years accounts to be restart as per IND-AS. No. So IND-AS is not mandatory for SME IPO. If the company has an IND-AS compulsion, then it is mandatory. As per SEBI, NSE, BSE, it is not mandatory कि आप IND-AS करिए. आपको नॉर्मल फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलना होती है, दैट इज गुड इनफ. बट यस, दैट शुड बी ऑडिटेड बाय अ पीयर रिव्यू ऑडिटर, एंड 3 साल की रीइंस्टेटमेंट होनी चाहिए एज पर LCDR रूल्स. जो सेबी के रूल्स है उसके हिसाब से 3 साल की रीइंस्टेट होनी चाहिए, एंड करंट ईयर का एज पर स्टैट्यूटरी पीयर रिव्यू ऑडिटर उस पर साइन होना चाहिए. इट शुड बी ऑडिटेड. मतलब लास्ट 3 years के ना? हाँ जी, लास्ट 3 years के एंड द करंट ईयर. Okay. And next is could you please explain how and who can apply in SME IPOs? Who can apply in SME IPO? Yeah. I told you the retailers can apply. Who can apply? मैं समझा नहीं. Like retailers less than 2 lakh apply. उसका पूछने का ये है कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे कर सकता है. Companies कौन apply कर सकती है for getting Yeah. listed? Yes. अच्छा. So companies की I have discussed this eligibility. Eligibility क्या है कि पिछले 3 साल में 2 साल प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी नेटवर्थ है, वो 1 CR होनी चाहिए 2 साल में. तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है. बट ये बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी है कि उसमें कोई नंबर नहीं दिए हुए कि कितना पैट होना चाहिए, कितना रेवेन्यू होना चाहिए. इन सब के लिए तो मेरे को विच आई फील कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में कि मिनिमम रेवेन्यू शुड बी 30 CR एंड द पैट शुड बी मिनिमम 8 to 10% ऑफ अ कंपनी. दो शुड थिंक ऑफ गेटिंग IPO. And if you think कि इतना हो जाएगा 1 year or 2 years down the line, then you can consider pre-IPO. Pre-IPO I'll discuss अभी. और वो पूछे कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? How can apply in SME IPOs? Applying as a company या applying as an investor? As a company. उसका तो पूरा प्रोसीजर है that we have discussed. कि पहले आपको कन्वर्जन करना है कंपनी का, देन यू हैव टू फाइल अ DRHP, अप्रूवल आएगी सेबी से, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करनी है, एंड दिस इज हाउ द लिस्टिंग प्रोसीजर विल वर्क. So I'll do one thing. अभी मैं pre-IPO I'll close it. तो 15 minutes और है, 15-20 minutes, and then we'll take all the questions. ऐसा कर लेते हैं. Yeah, sure, no problem. है ना? तो अभी I'll explain them pre-IPO as well. Okay. तो आज की डेट में हमने बहुत सुना है अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, pre-IPO होता है. बहुत लोग बोलते हैं कि यार pre-IPO में कोई शेयर्स मिले तो करवाइए, या कंपनी कहती है कि I want to get like I have an angel investor has invested, series A invested. कहीं ना कहीं these can be termed as a pre-IPO. So whatever investment that is made 6 months to 1 year before the IPO,
are all usually pre-IPO. People invest in unlisted shares. That is also a pre-IPO. कि unlisted shares में they are investing with a hope कि हाँ जी it will ultimately get listed. अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमने पहले मैं दोनों पॉइंट से लूंगा, एक इन्वेस्टर पॉइंट से भी लूंगा और फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लूंगा। इन्वेस्टर पॉइंट से ये होता है कि यार मैंने इन्वेस्ट कर दिया और उस कंपनी का आईपीओ नहीं आया तो अब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी वीसी ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया और उसको एग्जिट ही नहीं मिली तो अब ये दिस इज ऑल ऑन द प्रोबेबिलिटी। अब नाउ वीसी इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप, राइट? एंजल एचएनआईज आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप with a hope, with a probability that they'll ultimately get an exit. So this is the same thing when you are doing it in unlisted shares. Obviously, you need to do your due diligence, but the probability of getting an exit is far high in these companies because first of all, if you take my personal opinion, I'll onboard a client or I'll recommend someone. If you want to invest in this company as a pre-IPO, you can invest only if I know that that promoter has a vision to get an IPO 1 year, 2 year down the line. तो एक तो वो है एंड दूसरा obviously you will be doing your due diligence, you will getting the profitability revenue हाँ जिसका profitable है and they are growing. So ultimately the probability of getting an IPO in this case is far more. अगर आप देखोगे if you are investing as a VC, if someone is investing in a VC in a startup, so 10 out of 1 gets an exit in IPO, in listing. Usually ये होता है ना कि angel shares is taken by HNIs or ultra HNIs. Ultra HNI shares are taken by VC or PE fund or family offices. This is the chain कि बड़ा investor छोटे investors के shares लेता है. बट आईपीओ के सिनारियो में ऐसा कुछ है नहीं. इट इज ऑल रेगुलेटेड मार्केट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो उस केस में तो आपका 10 आउट ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी 10 आउट ऑफ 1 स्टार्टअप्स ओनली गेट इनटू लिस्टिंग. बट इसके अंदर 10 आउट ऑफ 7 to 8 आई कंपनीज गेट इनटू लिस्टिंग. तो आपको एग्जिट इजीली इसमें मिल जाता है. अब आता है कंपनी का क्या बेनिफिट है. कंपनी को क्यों प्री आईपीओ लेना है. देखिए इफ यू आर नॉट रेडी फॉर एन आईपीओ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी टर्नओवर मिनिमम 25 to 30 CR होनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं आईपीओ के लिए. उससे पहले यू स्टिल नीड फंडिंग. तो कंपनीज यूजुअली डू अ प्री आईपीओ कि हाँ जी ये मेरी कमिटमेंट है कि आफ्टर 6 months और 1 year आई विल बी गेटिंग एन आईपीओ. एंड तब आपकी जो वैल्यू है दैट विल बी मल्टी बैगर. इन्वेस्टर्स को ये कमिटमेंट होती है और कंपनी के पास ये पैसा आ जाता है to run their working capital, to run their business for 1 year. And once they show the profitability, then they can go for an IPO, then they can launch an IPO. अब इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो प्री आईपीओ में होते हैं एक तो उनको एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल जाता है. उनको उस प्रॉफिट में मिलता है, मान के चले 2024 के प्रॉफिट में उनको आज मिलेगा. एक तो ये हो गया. और 24 और 25 का प्रॉफिट ही मान लो डबल हो गया तो आपका शेयर प्राइस वैसे ही डबल हो गया. दूसरा जो पी रेशियो होता है प्री आईपीओ में वो मान के चलो 12 या 13 होता है और जो आईपीओ में होता है वो 16 या 17 होता है, 20 होता है. मतलब एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, मतलब इस रेंज में हो सकता है. तो आपको एक तो उसका बेनिफिट मिल जाता है और प्लस एक आपको जो कंपनी ग्रो कर रही है जब वो आईपीओ लाती है उसका बेनिफिट मिल जाता है. और कंपनी को ये होता है दे गेट अ रनिंग फंड्स इन द मीन वाइल. तो अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन और डिस्कस करता हूँ. So this company is into refurbish of mobile phones. So this is the mandate we have and we are working on it. इसके अंदर भी what we are doing is that they are planning to get an IPO on March 25. And जैसा आपने Cashify का नाम सुना है, Cashify is into buying of second hand. They are into selling of second hand phones, refurbished phone. कि iPhone 15 आए तो iPhone 14 they will sell it for the 1 year warranty. So it's a very unorganized market. So they are organizing that market. So उसके अंदर they have a roughly turnover around 12 CR और उनका PAT would be around 8 to 10% of it. And but उनकी जो March 25 के है वो exponentially grow हो रहे हैं. So March 25 target is around 40 CR. So what we are doing is, so what we recommended is you get a pre-IPO on the numbers of September. September में you will get a bridge funding.
And after that, in March 25, you start preparing for IPO, and July 25 you get your IPO. Because देखिए IPO का आप किसी के साथ भी कर रहे हैं, IPO इज नॉट समथिंग जो आप जल्दबाजी में करेंगे. इट इज अ वन, मतलब लाइफ टाइम थिंग है फॉर अ कंपनी. दोबारा जिंदगी में कभी IPO नहीं हो सकता. मतलब सब कुछ हो सकता है, IPO आपकी कंपनी का एक ही बार आएगा. तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी है. ये नहीं कि भाई आ जाएगी ठीक है भाई मेरे को 3 महीने 6 महीने में आप फंड करवाओ. 3 महीने 6 महीने ब्रिज फाइनेंसिंग करा सकते हैं अगर कंपनी is not showing that profitability which it is capable of. And after 1 year, 1.5 years, you work with the company, you organize the company in a manner कि वो हो जाए. तो इसलिए टर्न अराउंड टाइम जो अच्छे IPOs आते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है. अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी है. इट इज फॉर माई फेलो मेंबर्स एज वेल हु आर इन्वेस्टिंग or who who will be giving consultation to their client, and some of the clients who want to get into IPO. See, ultimately, promoters should have a vision. कि obviously इसको इतना exponential growth नहीं जैसे VC funding में लिया कि भैया they want 100x growth, they want 1000x growth, nothing like that. But yes, it should be a growing company, and they should have a vision. कि ultimately it's all about profitability and cash flows. Rather than growing your valuation and revenue, it's more about profitability and cash flow. Because if your profitability and cash flow is growing, market will ultimately take it into account और आपका share price अपने आप ही बढ़ जाएगा. Requirement should be for expansion and working capital. And एक चीज आप ध्यान दो कि थोड़ी सी लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लाख से 1 लाख to 1.5 लाख का इसका लॉट साइज होता है. That a lot comprises of 100 shares, and जो प्राइसिंग होती है 150 की मान लीजिए शेयर्स हैं 100 शेयर. तो there is a lot of around 1 lakh to 1.5 lakh. So the liquidity might be less as compared to the main board IPO, but the advantage of this is that there would be serious investors who want to invest in a long term. एंड जब आप 3 साल बाद मेन बोर्ड पे जाओगे या कोई भी कंपनी मेन बोर्ड पे जाएगी जिस पर आपने इन्वेस्ट करा, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स टाइम्स बढ़ के जाएगी. एंड अगर आप SME IPOs में भी देखेंगे, SME IPO has given far more returns than NSE और BSE. तो पहली बात वहां पे इतनी वैल्यू अनलॉकिंग हो गई, और उसके बाद जब 3 साल बाद आप जाओगे तब और हो जाएगी. इसके अंदर आप ये देखना कि कोई भी ऐसी कंपनी ना हो जो हाल फिलहाल में लॉस दिखा रही है एंड दे हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल, या लॉस मेकिंग कंपनीज. क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. मैं आपको एक आगे एक स्लाइड भी दिखाऊंगा, उसके अंदर था कि कंपनी की टर्नओवर कुछ नहीं थी एंड हाल फिलहाल में उन्होंने टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी की जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ IPO. तो इस कंपनी से भी आप दूर रहिए, इन्वेस्ट भी मत करिए, एंड यू शुड नॉट सजेस्ट योर क्लाइंट एज वेल, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम आने वाली है. एंड दिस इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी rather than trading. This is more of a long term activity. क्या आपने लिया 3 महीने 6 महीने 1 साल तक, एटलीस्ट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड. एंड जो आपका प्री IPO में जो आपने लिया उसका लॉक इन पीरियड इज 1 year. तो अगर आप जो भी प्री IPO में ले रहे हैं आप वो ध्यान रखना कि आप 1 साल तक उसको बेच नहीं सकते. एंड सो इज द केस विद द प्रमोटर होल्डिंग एज वेल. प्रमोटर कैन नॉट सेल देयर शेयर्स फॉर 1 year. बट अगर आपने एज अ रिटेल लिया तो आप नेक्स्ट डे बेच सकते हो. एंकर अलॉटमेंट में लिया है तो उनका 1 month और 3 months का पीरियड रहता है. विद इन 1 month दे कैन सेल 50% एंड आफ्टर 3 months दे कैन सेल 50%. तो सबके अलग अलग कैप है कि कब कौन बेच सकता है. बट यूजुअली पीपल इन्वेस्ट फॉर अ होराइजन ऑफ 6 months to 1 year इन दीज टाइप ऑफ सिनेरियोस. सो मैं आपको दीज आर 2 केसेस जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि इसमें अगर आप देखेंगे तो अमाउंट इज इन lakhs. So the company has recently made its revenue and they're getting into IPO. So this is not at all suggestible. And इसके नीचे ही अगर आप देखेंगे revenue is hardly 9 CR, 9.5 CR. मतलब 10 CR से भी कम रेवेन्यू है, and they are getting into IPO. मतलब लोग ये जा रहे हैं IPO के लिए, फंड भी रेज कर रहे हैं,
बट अल्टीमेटली आपको वही देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है आपको, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है, कंप्लाइंसेस कॉस्ट जो है या डीआरएचपी फाइलिंग की कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं फिक्स जो होती है। जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी रहती है वो रहता है फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग की अंडर राइटिंग जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन द इशू साइज एंड द वैल्यूएशन, बट सर्टेन कॉस्ट रिमेन सेम, सर्टेन कॉस्ट रिमेन फिक्स। जैसे कि आपकी डीआरएचपी फाइलिंग की हो गई या एमसी की हो गई या ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने की हो गई, जो कंप्लाइंसेस की है वो ज्यादातर फिक्स रहती है। सो यस, सो Devangji, we are almost done now, and we can now start with the question and answers. So question is So whether SME stock get also at listed the on. and at the end, I'll just discuss some of the case studies we are working on, so that will give them a idea. So अभी questions कर लेते हैं, and then we'll study some of the case studies. Okay. Question is whether SME stock get also listed on BSE, NS and NSE. Yes, they can be listed on both. It's entirely your discretion. But Devangji, can you see me? I don't know. ये इसमें हो रहा है? Or should I No, stop the screen sharing? Huh? Video is not visible. It's only So picture. should I stop the screen share? Yeah. Yes. That is. One minute. No, yes, sir. Now it's visible. Now it's visible. Huh? So I thought with the screen sharing, the video wasn't visible. Yes, totally. Yeah, sir. So next question is what is the lock-in period for existing shareholding for SME IPO? So different parties have different lock-in period. So starting with pre-IPO. Pre-IPO, if you are getting a shares in pre-IPO, the lock-in period would be 1 year from the date of listing. If you are getting into anchor allotment, lock-in period is 50% 1 month, 50% after 3 months you can sell from the date of listing. If you are doing it as a retail investor, there is no lock-in period. You can sell next day as well. And so these are three of criteria that is with respect to lock-in period. Sir, next question is so big. The next question is see existing capital is rupees 10 crores. Promoter having 50%, relative having 30%, PE having 20%. Now fresh IPO for SME. How much capital will be in lock-in period? One thing, so you need to repeat the numbers. क्या numbers होता है? Promoter have 50%, relative have 30%, and PE have 20%. Okay. Now fresh IPO for SME. How much capital will be in lock-in period? See, first of all, the there is no bifurcation की promoter कौन है, relative कौन है. They can be come into relative category. And PE का भी आपको ये देखना है, you need to see the holding period. If it is more, there should be no substantial change in the last 1 year. अगर there is a change in 1 year, that will not be considered as promoter. 1 year से पहले जितने भी हैं holding substantial shareholding, those will be considered as promoters. So पहली बात तो ये है कि जो डाइल्यूजन होगी प्रमोटर्स की, आपको ये देखना है कि होल्डिंग पीरियड क्या है, उसके हिसाब से ही 25% दे कैन डाइल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन कि 80% प्रमोटर की जैसे 50% एंड रिलेटिव हैव 30%. So we need to see whether this 30% is forming part of the 50% or not. Like will that be cumulative to 80%, or only promoters holding will be taken into account while raising funds? And sir, दूसरा क्या था क्वेश्चन? वैल्यूएशन. सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें इसने पूछा था कि वैल्यूएशन उसकी 10 करोड़ है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है उसकी 10 करोड़ है, जिसमें हमने प्रमोटर 50% करे, रिलेटिव 30% करे, पी 20% करे. ठीक है. उसने पूछा कि फ्रेश आईपीओ एसएमई हाउ मच कैपिटल विल बी स्टॉक इन लॉकिंग पीरियड. सो प्रमोटर्स इज 1 ईयर. आप कुछ भी करें, प्रमोटर्स विल बी 1 ईयर. और अगर पी ने 1 साल पहले लिया है तो उनकी कोई लॉक इन पीरियड नहीं होगा. इफ दे हैव परचेज्ड विद इन 1 ईयर,
then they have a promoter's lock-in period, and the same goes for relative. Or same really goes for relative for 1 year? Yes, it depends upon कि उन्होंने कब लिया. If they have purchased it 1 year before the IPO, then it will be getting into the lock-in period of 1 year. Okay. So, sir, next question is, can we invest in a SME IPO through ASBA? Can we invest in SME IPO through? ASBA. But see, SME IPO is exactly same as you are investing in any of the main board IPO. So, like normal app, like if you can doing it through Zerodha, 5paisa, it is exactly same. You can invest through that. Okay. So next question is, can a 1-year-old startup SME get listed? No, minimum 3 years. Minimum 3 years should be in existing. So you can prepare for pre-IPO, but minimum 3 years should be existing, and you should be profitable. Out of those 3 years, you should be profitable for minimum 2 years. Any minimum tangible assets criteria for eligibility for SME IPO? So the criteria is same for SME companies. The turnover criteria. So that is the same as the investment capital. It should be not more than 10 crores. It should not be more than 50 crores. But there is no criteria for tangible investment for NSE और BSE. ये SME क्राइटेरिया में फॉल होने के लिए हैं जो आपको उद्योग आधार का सर्टिफिकेट मिलेगा. बट एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसका. देयर इज नो क्लासिफिकेशन कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए. आप सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है. द ओनली बाइफिकेशन इज दैट आप एलिजिबल है उद्योग आधार सर्टिफिकेशन के लिए. ये है. So what is the estimate cost of SME IPO? Say SME lifting 10 crores through IPO. What will be the cost? देखिए इसके अंदर ना आप कॉस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला आता है आपका कंप्लायंस कॉस्ट, कि जो भी स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस हैं एनएससी बीएससी के या एमसीए के ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के. अब ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारा इशू साइज क्या और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए करता हूँ तो मेरा एमसी में फीस 8 लाख के आसपास जा सकती है. इशू एक्सचेंज में अगर मैं कंप्लायंस फीस की बात करूँ तो इनिशियल फीस हमारी 3 लाख जाती है. तो दीज आर द कंप्लायंसेस फीस जो हमारी जाती है. दैट इज गवर्नमेंट फीस, स्टैट्यूटरी फीस है ये. फिर आता है ये कंप्लायंसेस करवाने की फीस जो सीएस की होती है या मर्चेंट बैंकर की होती है, जो डीआरएस की फाइलिंग की फीस होती है. तो वो प्रोफेशनल फीस होती है. दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशन टू प्रोफेशन, या मर्चेंट बैंकर कौन है, सीए कौन है, उस पर डिपेंड करता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इशू साइज क्या है हमारा. बट जो मेन इंपॉर्टेंट फीस होती है वो होती है हमारी अंडर राइटिंग की. अंडर राइटिंग इज इंटायरली ऑन द परसेंटेज बेसिस कि कितना इशू साइज है, और उसके हिसाब से परसेंटेज के बेसिस. जैसे आप स्टार्टअप फंडिंग में होता है, स्टार्टअप फंडिंग में देयर इज अ अंडर राइटिंग दैट इज डन. अंडर राइटिंग एक कमीशन जो पे होता है, इसके अंदर अंडर राइटिंग करनी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंडर राइट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कि मान के चलिए आप 10 करोड़ का इशू ला रहे हैं तो 10 CR इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. If that is not, if you don't get it from any of the investors, or if you are shortfall of say even 2 CR, then it is his responsibility to complete that fund. So वो underwriting की commission लेता है, and that is all percentage based and depend upon कि किस valuation पे ला रहा है and what is the issue size. So there is no fixed ballpark figure to that. It all depends upon case to case basis and the issue size and the valuation, the right valuation which we are getting into. Okay. So, sir, next question is there any financial institution to provide for temporary working capital needs of MSME exclusively? So obviously there are many government schemes, CGT, MSC scheme है, but that is into debt, project financing है. They are providing collateral fee up to 5 CR. So that is one of the scheme which you can think of. And or भी MSME loans की scheme है. There are different scheme, but that is all on the project financing and working capital में ही है.
They give CC limits. So if you want to go into debt side, so that is one thing that you can explore. Obviously, उनकी cap है up to 5 CR, but for starting, you can explore those schemes of government. But equity के लिए there is no as such. Equity के लिए तो the roadmap which I have discussed with you, that is the roadmap. And how can an SME ensure a successful IPO? So for being a successful IPO, there are two things. One, the most important thing is the valuation. What valuation you are bringing on the table for the investors, for yourself, whether it is a retailer, HNI, or the anchor investor. See, retailer will certainly sell it on the first day, but the long-term investors, if everyone is selling, then the share will get dumped, right? So you will have to keep something for the table for investors as well, for them to hold it on long term. So for a successful IPO, the most important thing is the number that you are fixing for the valuation. So this will be the most important thing. The second will be the promoter's vision and the integrity. What is the vision of the promoters and what is the integrity of the promoter? Like the purpose of utilization of fund. Are they genuinely require the fund for expansion? So I'll tell you, I was just about to discuss a case. So I'll tell you a case in which we are getting this IPO. So we have explicitly said that the independent directors will be someone from the having prior experience, will be a technocrat or a bureaucrat. So we have specifically take someone from IIT and IIMs as one independent director, another as an ex-bureaucrat, because that brings in the credibility to the organization. तो आपको ये overall plan करना पड़ेगा कि there are small parts to it, but you need to connect the dot. So these are small things that you need to take care while getting your IPO done. So yeah, so these are the primary things. One is the valuation, and the second is the promoter's vision and integrity, which is getting the IPO. Okay, so sir, last two questions are how has the SME IPO landscape in India evolved in recent years? So it was started in 2012, and 5 साल तक, for next 4 to 5 years, there were only 100 companies, those which got SME IPOs. And in next 2 years, there were 100 companies which got SME IPOs. Next 2 years, they got 100 IPOs. But in 2022 alone, there were 137 companies that got SME IPOs. 2024, similar case. And this is going to increase day by day because this is an avenue which was unexplored. It requires minimum compliances with respect to any of the debt funding, and the cost associated with this is also minimum. So as I had discussed, there is no interest burden. There is no principal repayment that you need to do. There is no security that you need to give. The only thing is the 25% equity that you need to dilute. And वो भी मैंने आपको बताया था कि आप कंट्रोलिंग स्टेक देखिए तो बड़े से बड़ी कंपनी, मतलब अगर आप स्टार्टअप्स को भी छोड़ दीजिए, स्टार्टअप में तो खैर डबल डिजिट का वो रहती है, इक्विटी रहती है, डबल डिजिट की भी इक्विटी नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप, जोमेटो को देख लीजिए, पेटीएम को देख लीजिए, बट बड़ी like top MNCs as well, they also have to dilute an equity to a certain level if they want to unlock the paper wealth which they have. So it has a huge potential in going forward. Yeah. Okay, sir. So last question is difference between IPO cutoff price and floor price. Difference between? Difference between IPO cutoff price and floor price. I think IPO startup price. No. The question is IPO cutoff price and floor price. Okay. So like I told you, in the book building process, so there is a range around 200 to 250.
So you need to place a bid. What price are you ready to take? That is a cutoff. For example, you are willing to purchase at 230. So that will be the cutoff price. 230 से ज़्यादा I will not be paying. उससे कम ठीक है, अगर आ गया तो I'll buy, but उससे ज़्यादा I will not be paying. So that is a cutoff price, and the floor price is the actual listing that will be done. The issue price, though, the market the market will be making that price. So that the initial price is done by the company, but the issue price will be decided by the market. So I can discuss two case studies which we are working on, and that might be helpful for our members and the clients over here. And then we can wrap up, Devang, if you want, in 10 minutes, if that's okay with you. Yeah, sure. Sure. So there is a client of ours with whom we are working as a fund. So we have a fund, and we are helping into fundraising and filing of DRHP. And they have a turnover of around 60 CR as of now, and with a PAT of around 8 to 10%. So initially, what happened is, as I told you, the IPO cost which you need to pay is after the fund has been raised. That is the thing. But in many cases, like in this case, what we are doing is we did a pre-IPO. We did a pre-IPO of around 2% only. And in that 2%, he was able to raise 2 CR in the pre-IPO. And now when the pre-IPO was done for both investors' benefit, we did it for 14p. And when we are getting it at a 17p. And the profitability has also changed drastically from then and now. So in both these cases, what happened is they got the working capital and the initial thing to get the momentum going. So they got the funding, and now we are planning for their IPO. So their IPO would be coming in the next month. So this is one of the things which you can do with your investor, because earlier the turnover was around 35 CR, and now it has gone to 62 CR. So when they were at 32, they were not ready to dilute that much of stake, or they were thinking कि जो पैसा मेरे को मिल रहा, that is not equivalent to the stake which I am diluting. So इसलिए they said that we want to dilute it at a very reasonable valuation. As I told you, that valuation is very important. So they scaled up, and now that they know that it is a reasonable valuation, they can dilute their 25%. Now they're diluting 25%, and earlier they diluted 2%. And same is the case with another client. So their turnover was around, now it is around 35 CR. Earlier it was around 13 CR. And it was the same case. So all I'm trying to say is that pre-IPO or investing in an unlisted shares, but yes, please remember that there has to be your client, your known, they are ultimately getting into IPO. Then only get into the pre-IPO segment. You can invest in them at a pretty early stage so that they also get the fund and you also get a leverage of the investment. And when you know that Hanji, they are growing, so obviously it is done through a consultant only. So we see the company as they are committed that they'll be giving an exit to the investors. And yes, if they are growing and at that optimum time, we can get their IPO done. So abhi ke liye, or if you're planning, Hanji, we have some companies, we can get their pre-IPO. And when you see that, yes, they are at a good level, they are scaling up, then they can go for a post-IPO. They can go for a IPO. So this is it from my side. Okay, sir. So is there any you want to share? You getting my voice? Yes, you are audible, sir. So is there anything else you want to share with the participants?
No, it is done from my side. If there's anything I can, if there's any query I'm ready to resolve, or they can reach out to me. So very much thankful and wonderful session which you give. And for this in this session, so much participant ask so many questions and take very much initiative in this. And I really thank you to you to give your precious time to us. Thank you, Devangji. for Thank discussing. you, and thank you, Dheerajji, and thank you, Raj Chawla, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Rahul. Brilliant, sir. Okay, I'm dropping off. Thank you. Yes, sir. Thank you, Rahul, for supporting. Recording stopped.